गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा की यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2019 का है। 80 मार्क्स का ये पेपर है और इसके अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए थे 3 आवर्स। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बी पार्ट, सेलेमेका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994। सी पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स इन इंक्लूसिव स्कूल। D part, measures of development positive relationship between school and home. Unit 1, question number 2, define learning disability. What are the causes of learning disability? Describe the characteristics of learning disabled children. Question number 3, describe the models of inclusion. Now, unit number 2, question 4, discuss the educational provision mentioned in the National Policy on Disability 2006. Question number 5, describe the role of various organizations in the education of children with disabilities. Unit number 3, question 6, what do you mean by special needs? What are detailed note? Write a detailed note on special needs of children with disabilities. Unit 3, question number 7, describe the characteristic of an inclusive school. Give suggestion to develop positive attitude toward disability. Unit number 4, question number 8, discuss various pedagogical strategies to respond to individual needs of learner in classroom. Question number 9, what do you understand by information and communication technology? Describe the importance of information and communication technology in inclusive setup. Thank you.